What happens is Vivekananda is telling the group, from today you are all reporting to Rakhal. It is such a shock, Rakhal is the quietest among the lot. There is a person called Shivanand. Shivanand is saying, गया भाड़ में, मैं ना खाली जाके पूजा ही करूंगा जा. It was so difficult to put the group together, and then everybody is on his own, and then they want to show their own importance. So for Rakhal's name was Swami Brahmanand. He was called the son of Ramakrishna ji. So everybody goes to Vivekananda and says, why is he there, the leader? You should become. And Vivekanand, उसका आंख ऐसा बड़ा, एक तो उसको देखने के बाद सब डरते थे. And he used to always carry that stick of his. तो खाली उसका एक पर्सनालिटी को देख के है ना, ऐसा डर लगता था. और जब भी आते थे तभी हमें सब अपना काम चालू. So even when he went to Brahmanand's office, Brahmanand had a huge desk and he would sit behind a chair and all that. He was the president of the Ramakrishna mission, and the moment he used to go, he would stand up like that in attention. ऐसे टीचर आता है या प्रिंसिपल आता है तभी सब जन खड़े होते हैं ना, वैसे sit down. So this is what creates a sort of antagonism. But there is no point in antagonism. Everybody is supposed to work in tandem. If you understand that you are that lung or the heart or the liver or the intestine, you will know your own importance. And as a body, I can't favor anybody. I can't favor. I'm going to favor my right hand side only. अभी मतलब मेरा ऐसा हो जाएगा कल से. समझ में आया? नहीं होना. तो importance is to be given to the whole body. So, and the one thread that holds this together is the Guru himself. Nobody else can hold this thread in place. And everybody has his own way of complaining. Okay? वो देखो ना ऐसा करता है. And the Guru will look at him. Yeah, I know. What can be done? Okay? It's a very funny thing, believe it or not. I have personally seen some gurus when this guy will go and complain. I mean, not one, two, three people will come simultaneously. Guruji, like this happened, like this. And the Guruji is looking at them. Okay, all right. And then this group will come out. I mean, I was one day standing in one group. The guy thinks no end of himself, वो सब controls लेके है ना, ये कर रहा है, वो कर रहा है, वो कर रहा है, वो कर. And Guruji, look at him, he's siding him, he's not even saying a word. And I was smiling. तुम क्यों हंस रहे हो इधर? तुमको कुछ फर्क नहीं पड़ता है ना, तुम तो यहाँ पे थोड़ी रहते हो. So I said, okay, मैं नहीं रहता हूँ, तो फर्क क्या पड़ता है? You should see the administration. This is such a big pain. आज ये होने का है, कल वो होने का है. And it's like, I saw in one kitchen, there were this group of people. And one of the persons in charge of the kitchen, these guys only go and report to him. The other fellow, they are not even bothered. And he's telling them, ये देखो ऐसा करने का, वो ऐसा. They all look at him like this. So there's a formation of a coterie. Well, groupism. Just like in a company, how there is a groupism, no? Some people will only go and sit in one place. लंच के टाइम पे वो बाकी कोई आएगा, दूसरा कोई आएगा तो ऐसा देखेंगे क्या मानता है. So this groupism is also there, and it's a part and parcel of this activity. Please understand, what is the main teaching? Everybody forgets. The teaching is this, that we are all equal.
in the eyes of God. There is no special Arjuna. Everybody is an Arjuna. Okay? Giving importance to everybody and keeping everybody in their own places is very, very essential. The truth is that you may think you are suitable for some other place and somebody else will think you're suitable for some other place. No, you have been given a particular location or a place for your own purpose or your good. And this is the exact star, the layer upon layer which has been created elsewhere, everywhere. Now, Sharda Ma could not have taken credit. She was staying in the neighboring place. Yeah, there was a certain thing which she would do, which others would not do, in a sense that she would, ensure that her husband ate food at a particular point in time. Okay, but there was, if you look at it, there was no favorism anywhere. But the world thought there was favorism. I'll just give you an instance. I was told about this. You are favoring your family. You have a wife and a child, and you are favoring that person more. So I asked the person, I said, I would like you to tell me, do you have a house? Yes. How many houses? More than two. Good. Father, mother, brother, sister, children, everybody is there? Yes. What was the major problem? XYZ was the major problem. Did it get sorted out? Yes. Are you comfortable in your funding and you have a bank balance and are you good enough? Yes. You have everything going for you? Yes. नौकरी ये वो सब है? Yes. Now I am asking you a question. Tell me, ये किसकी वजह से हो रहा है सब? So the person naturally, you don't have a choice, as if I put a gun against their head. No, no, you are the one who is giving. I said, I'm sorry. God is giving. Always say these words. God is kind enough for this. Now I want you to think about the one that you think is doing a favor. Do you have a house? No. Do I have a bank balance? No. Do you think I am providing for my child for being, studying anywhere? No, I am not even working. Do you think that this business is doing so much that there will be millions or billions flowing? No, there is nothing like this. Sickness and illnesses, they are very much there. So, what makes you think that I am favoring? I mean, who is this who makes you think that I am doing a favoritism in this? You got to tell me this answer. It is only your mind, don't you see? I am staying in this place. Does it mean that I am doing favoritism to anybody? No. It is your mind which is throwing up all this nonsense. Let us take, for example, Brito, Senthil, you, or Aparna, or Padma, or anybody. You are as dear to me as Kalpana. It's not, there is nothing like that they are dear to me. Okay, she has put up post 29 years of marriage and all that. Okay, 29 years of marriage to this body, to Suresh Rao. She married Suresh Rao 29 years ago. Okay, but don't you think I have been talking all along that even if you are born through somebody's body doesn't make you that person. You can't take ownership of the body. You have been very clearly told about this. Even if you marry somebody, you can't take ownership of the person. एक दिन में एक पर्ची तुम्हारे मुंह के ऊपर मार के चला जाएगा वो आदमी. तो your value is worth one piece of paper.
वो उधर जाके तुमने वो रजिस्ट्रार के पास साइन भी किया होगा तो फायदा क्या? I tell you one story which happened a few years ago. When I didn't know this person. Suddenly, the person contacted me and said, Guruji, I want to talk to you. I said, yeah, what is it? I have been married just 6 or 7 days. I said, okay, congratulations. But Guruji, the moment I went to my husband's place, he's telling me, I am not in love with you. There is this other girl I would like you to meet. It was literally like a big slap on this girl's face because she had got into this marriage with so much of enthusiasm after being in love for 4 years, going against the parents' wishes and getting married. Imagine this state, what would happen to a person? And the goodness of this person was, I would like to live with this man, even if he doesn't love me. Naturally, as people, now how much of ऐसा एसिड खोल गया मुंह पेट के अंदर आदमी के, नहीं लगा पकड़ के साले को धोना चाहिए? ऐसा कैसा 4 बरस ये लड़की को घुमाया और पेरेंट्स के विरुद्ध जाके शादी किया, और शादी करने के बाद 6 और 7 डेज के अंदर बोलता है ये मेरी गर्लफ्रेंड को मिलो। व्हाट काइंड ऑफ अ जर्क आर यू? I mean, why did you get married in the first place? ये ऐसा हम लोग सोचते हैं ना, normal human being will think like this. Destiny doesn't think like that. It is destined, and we have to go through the flows. So we are so much, bowed down by destiny and the way the God works. So we have to follow that. But acceptance is that one word which doesn't come. Acceptance. Why can you not accept? God has given you this place. Why can you not accept it? There is no favoritism anywhere. I'm sorry. God has created this universe in this way. Okay? So if Chandorkar is close to Sai Baba, he is close to Sai Baba. You can't do anything about it. So let us leave it at that. Okay? If there is a Das Ganu who just sings songs and praises Sai Baba, he is Das Ganu. You can't take Das Ganu's place. Das Ganu is Das Ganu. Do you remember there is this very beautiful story where Tansin and Baiju Bawra? I'm sure you have seen that Yeah. movie. It's a very beautiful film. Now you can't replace Baiju Bawra, neither can you replace Tansin. Both are perfect in their places. And one can't be called a Navratna and other cannot be called. Everybody is Navratna as far as the king is concerned. Whether Akbar says ये में नवरत्न है या वो नवरत्न है, क्या फर्क पड़ता है? सभी रत्न है, सभी रत्न है. So you have to give that credence. Okay. Next to Akbar, there is always the Birbal sitting. Okay. So Birbal can't sing for nuts. Okay. So don't expect him to sing for nuts. So, so volume. So you please understand, everybody is perfect in their places, and consider it as the service to the Lord alone. The Lord is not bothered कि मेरे है ना सिर के ऊपर फूल अच्छा है कि मेरे गले में का फूल अच्छा है कि मेरे पैर का फूल अच्छा है. हर फूल को अपना अपना स्तर है, अपना अपना स्थान है, अपना इम्पोर्टेंस है. बांसुरी ने अगर सुदर्शन का काम करना चालू किया तो बहुत तकलीफ होगी. There will be a lot of hot air. Yeah. So let us not get into Basri trying to become a Sudarshan. Let Basri be a Basri. And like Krishna was literally torn into pieces by the gopis when he went for the first time. There is a very beautiful episode where he goes and these gopis, they literally go to tear him apart. You should read this episode someday.
If I get a chance, anyway, I get a chance का बात ही नहीं है, हमने श्रीमद् भगवतम अपने यहाँ आ गया है, तो हम लोग जब करेंगे तभी वो उसमें वो एपिसोड है, जब भी वो कैसे उसको है ना लिटरली चिंदी के जैसा टेयर करने की कोशिश करते हैं। कोई उसका फिंगर खींचता है, कोई उसका कान खींचता है, कोई उसका गाल खींचता है। अरे 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 अरे, ऐसा क्या है? एंड देन दिस गाय लिटरली रन्स अवे, मानी से मैं नहीं आएगा तुम लोग के पास। And then the next episode is everybody is dancing on their own with their own dream. And the in Padma's house there is a very beautiful painting which I always admire. Krishna is seen with everybody, dancing. It's an amazing picture. I don't know whether Tej has drawn or somebody else given or what, but it's a beautiful picture. It is an amazing one. It tells you, oh, Padma has written something. I'm sorry, I'll come to it. Huh? I couldn't locate. Oh, I'll just come to your question. It's a question, I think. So, uh, oh, I have just added to whatever you were saying. That's oh, all. अच्छा 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 नहीं, मेरे को उधर ध्यान नहीं जाता है, वो No वो थोड़ा problem. आउट ऑफ द वे हो गया। Yeah. So there, so you have to give credit to everybody perfectly in their own places. Uh, so I think you got the gist of it. We have to all work in this universe with the sweetness and not with any venom or thinking that other person is bigger than this one. There is nobody greater, there is nobody lesser. Everybody is equal. The fruit is as equal to the leaf. Without the leaf, where the fruit will come? झाड़ ही नहीं रहेगा तो कैसे चलेगा? तो झाड़ रहना बहुत इम्पोर्टेंट है। फ्रूट भी आएगा, तो पत्ते भी आएंगे, पाल आएगा, ये सब ऐसा कुछ आएगा अपनी जगह पे। एंड you cannot consider yourself as the most dearest. Everybody is dearest. Okay, everybody is dearest. भला मैंने अगर है ना काम करने का बंद किया तो, अरे ऐसा नहीं है, सबको अपना अपना जगह सही है। ऑल राइट, सो आई नो इट वाज अ लेंदी आंसर, बट Thanks, Baba. any questions, or we can continue where we left? Yeah. I was reading about Divine Life Society. Ah, ha, ha. There are some rules about living are given. There it also says do charity, and if Yes, possible on a daily basis. yes. I thought, I don't know, is it required to do charity or? Yes, yes. See, mm, let us say, for example, there is a king. Krishna is the king of Dwarka. Now he is collecting taxes from everybody. Like in India today, we are collecting taxes. The government collects taxes. Now, why is the taxes collected? So that there is the proper growth of this country. So infrastructure comes up. So all schools and Defense and everything is taken care of. Can I say that defense is a useless thing? Only when there is war I will have defense. No, I can't say those words. Defense is equally important as agriculture. Agriculture is as equally important as home ministry. So every ministry is important. So there is some ministry which is called Child and Women's Welfare and all. You know, Renuka Chaudhary is, I Chowdhury. think, is the minister, if I am not mistaken, in India. Now you may say कि उसका जरूरी क्या है? वैसे भी child or woman is the husband's problem or is the man's problem. He is supposed to take care of. There are three women sitting over here. मेरे को नोच के निकालेंगे.
बोले कि सारे तू इनको ज्यादा फेवर करता है, हैं? No, that ministry is equally important because sustenance. We are sustaining, this whole universe is sustaining because of certain reason. Certain trees, certain plants are semi parasites, some of them are complete parasites, isn't it? They live like cuscuta. Cuscuta is a plant which has no leaf. It's only like a or a yellow color stem which is going all over the place. It has its roots right inside the pith of that plant, and it is sucking that whole thing up. Even sandalwood for that matter. Yeah. हमारे बाल में एक ऐसा ही है, जू रहती है, रहती है कि नहीं? वो तो अपने Zoo ये is extinct now. नहीं नहीं, एक्सटिंग नहीं बोल सकते। वो नागा बाबा के पास जाके देखो, वो लोग तो बाल कंघी नहीं करते, उनके यहाँ पे पूरा यूनिवर्स है। तो ये जो यूनिवर्स है वो मेंटेन करना बहुत ही, अभी कल हर हर महादेव का एक वर्ड है, अनिवार्य है। अरे बाबा जी, हर वर्ड के पीछे वो अनिवार्य है करके अनिवार्य. बोल दिया है। तो ये अनिवार्य का आज तक मेरे को मालूम नहीं है मीनिंग क्या है, अभी जाके मेरे को ढूंढना पड़ेगा। अनिवार्य। सो दिस यूनिवर्स इज सस्टेन्ड in that way. When, if you have read about Divine Life Society, they were responsible for taking charge of certain villages and educating the people over there, maintaining the village in a perfect condition. If you take the art of living, it has adopted n number of villages across India, and they have taken charge of the schools and this and that and so many other things. This is nothing but a sort of a charities. What happens is when you have extra, you have to pass it on. So, and that passing on is left to you. Nobody is going to dictate terms to you कि इतना ही देना पड़ता है, ऐसा कुछ नहीं है। वो तुम्हारी मर्जी, देना है दो, नहीं देना है मत दो। अगर कल परसों का अगर हर हर महादेव का एपिसोड देखा होगा, तो उसमें वो बोलता है कुबेर को, शिव जी बोलते हैं कुबेर को, देखो द रीजन वाई यू हैव बीन गिवन दिस इज सो दैट यू कैन स्प्रेड दिस मनी, दिस Distribute. या डिस्ट्रीब्यूट इट इवनली। जैसे इवनली का मतलब ये नहीं कि एक को ज्यादा, ऐसा भी नहीं। हाँ, किसी के नसीब में ज्यादा है, किसी के नसीब में कम है, मिलना तो चाहिए उनको। जैसे हर एक नदी जाती है तो नदी का पानी सबको मिलना चाहिए ना, तो कोई कोई तो अकाल पीड़ित हो जाते हैं। सो वी हैव, isn't it the duty of the people, those who have water, to spread water over there? Yes, it's our duty. हमारे पास है तो दूसरों को, उनको नहीं है तो देना चाहिए। सो ये जो रूल्स हैं डिवाइन लाइफ सोसाइटी के या किसी भी संस्थान के, वो बैलेंस इन द यूनिवर्स रखने की जरूरत है। कृष्णा के टाइम पे या राम के टाइम पे दे वर रूलर्स, दे वर किंग्स ऑफ दैट टाइम, and they were very very benevolent kings, isn't it? So they also did this when it was necessary. Didn't Sudama go to Krishna to ask for money? He couldn't open his mouth. उसने वो खिलाया और वो चला गया, बोला कि मैं बोलने को भूल गया। अभी बीवी ने उसको बराबर रहना बोला, है जाके उसको बोल के आ जा, तेरा दोस्त बहुत रिच है, उसको जाके पैसा पूछ के आ। And he couldn't open his mouth at all in front of Krishna. Krishna also is a very chalu character. You should He is understand. all-knowing, yes. So he knows everything. So what he did was, before Sudama could reach his country, there was a fantastic bhavan in place. Palace. Yeah. So it is like that. So definitely. Now you may say, उसने favoritism किया. अरे sorry, it was not favoritism. It was meant to be, so it happened. Some person will say, you know what, कि मेरे को है ना गुरु जी का आशीर्वाद है, वो मेरे को उसने फल दिया, इसके लिए मेरे को बच्चा हो गया। अच्छा, फल से बच्चा होता है, मेरे को खुद को मालूम नहीं था। कल से मैं है ना एप्पल खाने का छोड़ दूंगा, मेरे को बहुत बच्चे हो जाएंगे। ऐसा नहीं है। What actually happens is the two and two fall together.
The destiny that you are going to have a bacha and the fruit coming in falls together because God may want something else to come in place. And what is that something? Faith. You understand? He is not saying bacha is responsible because that fruit came in the way. No, it is the fruit and the bacha has no value. It is the faith which has more value. So the faith was important. So it came up over there. So what is the main thread? The main thread is called the faith. Faith. So this is the reason why these sometimes, you know, the guru's job is only to teach. He is only there for the purpose of teaching. If you look at Chinmayananda or Sivananda or whoever, they never interfered in the day-to-day working. वो जाके किचन में खड़ा रह के वो बोलेगा भी नहीं कि आज ये बनाने का, कल वो बनाने का, हम लोग परसों नहीं, he would just keep an overall, understanding. अच्छा ठीक है, और जिसको जो रिस्पॉन्सिबल काम दिया गया है वो तो रिस्पॉन्सिबल काम करेगा कि नहीं. देखो, अगर सीईओ हर एक डिपार्टमेंट में हस्तक्षेप करने लग गया, सीईओ इज द वन हु रूल्स द होल प्लेस, तो इट्स गोइंग टू बिकम अ पेन. सीईओ के पास सिर्फ जब भी मीटिंग होती है तब जाते हैं हम लोग. चेयरमैन को क्या है, वंस इन अ ईयर मिलते हैं. He only wants the profits, बस. नहीं नहीं, चेयरमैन चेयरमैन को प्रॉफिट्स नहीं मिलते. प्रॉफिट्स गोज टू द शेयर होल्डर्स. Chairman is basically an appointee. The biggest joke to tell you is when Ratan Tata was the chairman or JRD was the chairman of Tata Sons, the entire shareholdings of Tata Group was only 7%. The biggest shareholder is Shapurji Palonji. Today, the new person who has become the chairman of Tata Sons, Mistry. yes, he is Shapurji Palonji's son. Oh. Huh. Now he has taken charge. If Shapurji Palonji didn't like Ratan Tata, they would have said, get out from here. And he would have had to go out. There are no options because he is not even the major shareholder. The holding companies, holding companies, holding companies. So here in this case, the chairman is not actually anybody whom we can say is the super boss. He's selected or done something like that. So the chairman is like, say for example, the Wipro chairman. Now he is controlling, I think, 85% of his company. That is why he is the chairman. But the moment somebody else takes over the company, do you think they will keep Mr. Premji or somebody over there? He's rushing. I'll be Yeah, back in 10 minutes. yeah. So whether it is Shapurji Palanji or whether it is Ratan Tata or JRD, doesn't matter. Nobody can stay in that position for a long time. And these are very dispensable people. Everybody is dispensable, including the guru. He is dispensable. वो चला गया ना तो फिर को उधर कुछ रहता ही नहीं है. तो वो था इसीलिए था, ऐसा भी नहीं है. साईं बाबा डाइड, उनके अस्थि को अभी सब जन प्रे करते हैं. रामकृष्ण जी वेंट अवे. Do you think there is an essence of Ramakrishna ji anywhere? No. I go to Dakshineshwar, I feel happy going over there. Why? Because that's a very nice place. I would love to go and sit over there. But the rest of the places, no. I don't find his essence anywhere. So wherever you find the essence, there you have to go. Okay. So we will do. Where were we? We have to start from 7, Bhav, chapter 6. 7, huh? So, the Supreme Spirit is rooted in the knowledge of the self controlled man, whose mind is perfectly serene in the midst of pairs of opposites, such as cold and heat, joy and sorrow, and honor and ignominy. Everybody has to go through this, joy, sorrow, ignominy. कितने जन ने, everybody, how many people have told you you are the worst thing on planet Earth?
Is there anybody in your world who has said, and maintained it all his life or her life, you are the greatest thing that is there? No, even that person who says, even if the mother says, you are my dearest child and you are the greatest thing, one day will turn around and tell you, तू पैदा ही क्यों हो गया? I mean, yes, होएगा, वो भी टाइम आता है जब माँ भी बोलती है ना, तू पैदा ही क्यों हो गया, जा इधर से, गेट आउट फ्रॉम हियर. अच्छा, इतने दिन तो मैं तेरा प्यारा लाडला ये सब था, हाँ, chakki piecing and you would make such beautiful stuff in the kitchen. I still remember the scene Nirupar Roy and Amitabh Bachchan of Diwar. And it was such a ham, the guy dying in the temple. It was such an extended scene, and I don't know why people liked it, but it was, I went on and on and on. Try to show it to the American audience. They look at it and say, can we fast forward this scene somewhere? Or maybe we'll take a leak and come. Even after that, this guy is still dying. और डाइंग करने के टाइम पे इतना बड़ा डायलॉग बोल के मरता है आदमी, मेरे को खुद को मालूम नहीं था. वहां पे डायलॉग भी मारता है. सो इट्स अ फनी थिंग वेयर येट उधर गाली भी मिलती है उसको, उसकी माँ उसको गाली भी देती है और उसको अच्छा भी बोलती है. So in our world, there isn't a person who can be only good to you and say, you are the best thing on planet Earth. There are going to be a lot of people who are going to give you galis. Once in a while, they हाँ बहुत अच्छा है, क्यों उसको कुछ फेवरेटिज्म किया इसके लिए बहुत अच्छा है, अदरवाइज नहीं. इससे मतलब ही दुनिया. So he is talking about this dunya on one side and then the person on the other side. Everything is controlled by knowledge. There were two knowledges which we did. One is called the jnana and the other one is called the vijnana. Jnana, the knowledge which takes us to this Brahma, Nirgun Brahma, correct? So jnana is connected to Nirgun Brahma. Vijnana is connected to the Sagun. Sagun Brahma, beyond that Nirgun. I know this is all bouncer hai. No. From the manifest is us, we have to go to the unmanifest. The unmanifest is called Brahma. Understood? It's called Brahma. So that is called the first Brahma. And that is called Nirgun Brahma. Nirgun means without any gunas. Gunas, Sattva, Rajas and Tamas. It doesn't have any gunas, it doesn't have anything. So Nirgun Brahma. First we have to go there. To go there we require the divine knowledge. So this knowledge is called Jnana. Understood? Now we come to the part 2. The second one, beyond this unmanifest, there is another unmanifest. And there the Supreme Divine Person stays. So who is the Supreme Divine Person? Krishna. Okay. So he stays beyond this first Nirgun Brahma. Alright. This second unmanifest, where he is the Supreme Divine Person, the knowledge of that is called Vijnana. Supreme Divine Knowledge. Okay. So this is what it is. So now in this he says, the Supreme Spirit is rooted in the knowledge of the self-controlled man. So the first, we is talking about the first one only. This knowledge or jnana will come to this person who is self-controlled. Control. You have to control yourself. Nana Patekar ke jaisa. Okay. So start controlling yourself. It has to be your own control. Nobody else in the group is going to control you. And nobody else outside is going to tell you, देखो ऐसा नहीं करना चाहिए. No. ये खुद का कंट्रोल खुद ने रखना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. When somebody says good to you,
यू शुड नॉट फील, है ना, ऐसा कॉलर ऊपर करके चलने का कोई ज़रूरी नहीं है। वो कॉलर जल्दी से नीचे आ जाएगी, क्योंकि वो अपने यहाँ स्टार ज़्यादा दिन नहीं चलती। इधर लाइट जाके आ गया, दिखता है ना मैं। सो सो इट डजेंट स्टे। द praise is will go away someday, and then the curses will start. And when the curses start, please don't bother about it, because the curses also कुछ नहीं होने वाला है। हमारे मराठी में कहावत है एक, वो बोलते हैं क्या, मतलब भैंस जो रहती है ना, उसके कर्सिस से आदमी मरता नहीं है। समथिंग समथिंग, ढोरा चाहेनी सम। कावळ्याच्या श्रापाने ढोरं मरत नाही. यस, तो तुम ढोरा है और बाकी सब कावड़े हैं, अलग कर लो बात। तो कौवे लोगों के श्राप से, with the curses of the crows, ढोरा means what, cows and all these cattle. So you are the cattle, and then all those people who are saying all that as crows. So वो क्रोज के इससे है ना, तुम लोग मरने वाले नहीं हो, तो छोड़ो, जाने दो ना बात काय को। सो उनको जो बोलने का बोलने दो। अपना अपना यहाँ पे एक ही है ना, एक नल्ली है, इधर से इधर तक सीधा आर पार है, इधर डालने का, उधर से बाहर निकाल देने का। सो नेवर कीप एनीथिंग इनसाइड। अपने यहाँ फिल्ट्रेशन प्रोसेस भी नहीं है, मालूम है। फिल्ट्रेशन प्रोसेस रखा तो बहुत तकलीफ होगी। इमेजिन करना, कोई कुछ बोला, आई मीन जस्ट इमेजिन यू हैव गॉन आउट, और किसी ने बोला तेरे यहाँ पे कुछ तो भी है, ऐसा ऐसा कितने बार है ना, आईना कोई भी आएगा तभी देख लेगा, कुछ है कुछ नहीं, फिर भी है ना ऐसा क्यों, जैसे कि वो यहाँ कुछ है। तो डज इट मीन दैट इट इज स्टिकिंग टू यू? नो 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 नो, you can be made biggest fool of. It's so simple and easy to say. Okay, one day I was standing in one company. Now there was this girl standing next to me, and she was looking at my eyes like this. So then she says, excuse me sir, are you wearing lenses? मेरा थोड़ा डीप ब्राउन आईज है, तो I did like this, and then I said okay. Yeah, these are my lenses, can you see them? Where are they? I said है ना मेरे हाथ में, दिखता नहीं है, वो कहाँ से? because I have seen how known reviews on it, तो मैंने भी ऐसा करके है ना स्टाइल बाजी करके बताया उसको। So it is like that. We are all fool people like this, foolish people like this. सुनने का नहीं, कोई गाली देता रहेगा, बोला कृष्णा अर्पण, कृष्णा तू है ना रेडी गाली खाने के लिए, तू खा। बोला प्रेज आया, नो कृष्णा अर्पण, फॉर मी ओनली। ऐसा नहीं, वो भी उसको दो बॉस, वो भी उसको दो। सो कृष्णार्पण टू दोस प्रेजेस, और कृष्णार्पण टू द कर्सेस ऑल्सो। हु केयर्स, आई डोंट केयर। निर्लज्जम सदा सुखी, मैं जब भी बोलता हूँ आप पर ना जोर से हंसने लगती है। हंसना जरूरी है, क्योंकि क्या है मानो, जब तक हम लोग शेमलेस नहीं होते ना, तब तक हम लोग किसी को जाके पूछेंगे भी नहीं। वी डोंट इवन वांट टू आस्क कैन आई हैव अ सेकंड हेल्पिंग। अरे पूछने का जाके क्या है, वो खाली इतना ही बोलेगा, नो। उससे ज्यादा कुछ नहीं बोलेगा वो। इमेजिन करना, तू एक तुम एक ये जो आइसक्रीम वाले के पास जाके वो कोन में आइसक्रीम लिया और पूरा अंदर का चूस के निकाला, उधर जाके पूछने का वापस क्या है वो सेकंड हेल्पिंग, वो देगा क्या तुमको? He is going to give you a stare like this, पागल है क्या? बोला नहीं, तेरे को मांगता है दूसरा आइसक्रीम खरीद। गलती से कभी ऐसा भी हो सकता है कि वो बोलेगा हाँ चलो चलो इसको दे दो, और निकाल के दे दे। I always tell my students one thing, you should ask. Without asking, nobody is going to give.
So when you go to buy some clothes or something like that or grocery या कुछ भी discount है क्या? You see that there is this ad in India that fellow says कुछ कम मिलेगा, कुछ कम मिलेगा, and you know such an irritating character. उसको कम होगा, अरे कम मिलेगा क्या यार, हर एक चीज में उसको कम डिस्काउंट मांगता है. इसी यू बेटर आस्क डिस्काउंट, अदरवाइज यू वोंट गेट इट. So I'm learning about it. I had a very funny incident just a few days ago, which I will relate. Now, my friend Rajeshri, she would do. She is like, I think she stands these words, Nirlajjam Sada Sukhi. She went to this place and they asked her there was one item available for sale. So they said this item is available for, I'm just giving a figure, suppose it is available for $200. Okay. If you have an OCBC card, there's a bank called OCBC, जैसा अपने यहाँ स्टेट बैंक वगैरह है वैसा OCBC बैंक कार्ड है तो $200, नहीं है तो $300. ओरिजिनल प्राइस इज $600. तो मैंने उसको बोला तेरे पास तो OCBC कार्ड नहीं है. He says don't worry, I will get it. She goes to the counter and she says you give me that thing. And that fellow says, if you have an OCBC card, you will get it for $200. Otherwise, you have to pay $300. Don't worry, I will have the card very soon. तू जाके डीलर के सामने बोलती है आई विल हैव द कार्ड वेरी सून, बोलेगा तो अजीब बात लगता है ना. अभी तो ये प्रोडक्ट अभी अवेलेबल है, तेरा कार्ड आने को 2 महीना लगेगा. There were 10 people in that big store. She went and asked every person in the store, do you have an OCBC card? Do you have an OCBC card? फाइनली एक है ना चिंकी था उधर, उसके पास OCBC कार्ड निकला. I will give you cash right here. Can you please swipe your card and I want to buy this product. And she bought that product. And then she triumphantly walked out of that store. I got my product for $200. समझ में आया? निर्लज्जम सदा सुखी. $100 का सीधा सीधा सेविंग इज नॉट अ जोक. करेक्ट है? तो पूछने में क्या जाता है? उसमें अगर तुम्हारा ईगो पकड़ के बैठेंगे ना, मैंने ऐसा कभी नहीं किया, मैं कैसा कर सकता, ओ अच्छा, मतलब तूने कभी सामने हाथ फैलाया नहीं है? नहीं, मैं कभी हाथ नहीं फैलाता है, मैं एकदम सीधा साधा भोला भाला, मैं तो अपनी कमाई की खाता हूँ. बोला अच्छा, अरे भगवान भी अपनी कमाई की नहीं खाता है, वो तू साला उसमें कमाता है, उसको थोड़ा सा देता है तो वो खाता है. तो तुमको क्या है? वो अगर तुम्हारे सामने बोलता है एक हाथ से ऐसा ऐसा, मालूम है देता है क्या, आने दो, हाँ, एक हाथ से ऐसा थैंक यू बोलता है और दूसरा हाथ से बोलता है आजा, करता है ना, तो फिर तुमको क्यों लगता है बुरा? So I loved what she did. She was able to get her discount. She was able to meet this person, give him the cash, and it was such a nice thing to see. Yesterday I was telling Kalpana how one day she went to Hong Kong. She had only one day at her disposal. You know how she does? She goes and she talks to every person everywhere. And she got hold of this guy and was speaking, do you know this place, how to go there, blah, 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 blah. Early in the morning, that man was with her right from morning to night. And she covered Hong Kong in one single day. Because you can do that. So don't have hang-ups about anything. I'm telling you this, don't have hang-ups. अगर किसी को पूछने का भी है ना, तो पूछने में तुम्हारा बाप का क्या जाता है? क्या बोलेगा वो? ज्यादा से ज्यादा बोलेगा नहीं देता है. ठीक है, नहीं देता है, ओके नेक्स्ट. अंडरस्टैंड? ये नहीं देता तो क्या हो गया? दूसरे के पास जाने का, फिर बोलने का तेरे पास है क्या? नेक्स्ट.
नहीं है तो और एक बार. So always have this, give yourself the credit कि मैं पूछ सकते हैं. और पूछने में मेरे बाप का कुछ जाता नहीं है, और मेरा तो कभी कुछ जाएगा भी नहीं. क्या होएगा, नाक तुम्हारा कटेगा, इतना बड़ा नाक है यार, कटने के बाद भी वो छोटा नहीं होने वाला है. पिनोकियो है हम लोग. So these verse, you have to understand it from the material perspective. Don't bother. What is this honor that you are talking about? What is this ignominy that you are talking about? What are these pair of opposites, likes and dislikes? What is this like that you are saying? I like this and I hate that. If you hate it, you are not going to go anywhere. Okay? वो इंग्लिश में वो लड़की को इंग्लिश आता नहीं, वो भी जाके उधर इमिग्रेशन डिपार्टमेंट में वो पूछते तू तू अमेरिका क्यों आई है, उसको बोलने को नहीं आता है तो वो पेपर सामने करते हैं, बोलते इसमें लिखे लाए तू पढ़ के ले. नहीं आता तो क्या हुआ. हमारे माँ बाप और उनके पूर्वजों को भी नहीं आता था बहुत सी चीज. ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा तो तुम छोटे हो रहे हो, नहीं, कोई बात नहीं, नहीं आता तो नहीं आता तो क्या होगा, आएगा बाद में जाके. तो उसमें छोटापन नहीं, बड़ापन नहीं, लाइक्स नहीं, डिसलाइक्स नहीं. सच अ टाइप ऑफ अ पर्सन who doesn't have likes or dislikes, who doesn't get carried away by honor or ignominy. There is no heat or cold, there is no joy or sorrow. Such a person is called self-controlled person, and then he is full of knowledge, and then he will attain the Supreme Spirit. The yogi whose mind is sated in jnana, knowledge of Nirgun Brahma, and Vijnana, knowledge of the manifest divinity, who is unmoved under any circumstances, whose senses are completely under control, and to whom earth, stone, and gold are all alike, is spoken as a God realized soul. Just now only I told you the meaning of the word jnana and vijnana. Again I will reiterate the sentence. Jnana means the knowledge of the unmanifest. Unmanifest, we are manifest, Brahma is unmanifest. So the knowledge about this unmanifest, मतलब जिसको ब्रह्म ज्ञान होता है, ब्रह्म ज्ञान, knowledge of the unmanifest. This person is called a jnani. Now, next comes Vijnani or Vijnana. Vijnana is the knowledge about this divine unmanifest. Second one. उसके बाद जो आता है, इसमें वो लोग बोलते हैं manifest divinity. He is manifest in the second one. First unmanifest, second unmanifest. In the second unmanifest is this supreme divine person called Krishna. He lives in that place. We call it Golok Vrindavana. Okay, this place is called Goloka. All right. The first place is called Brahma. Second one is called Golok Vrindavan. And Krishna stays in Golok Vrindavan as a supreme divine manifest. All right. This much you should know. And his knowledge is called Vijnana. So the yogi whose mind is sated with the knowledge of Nirgun Brahma and knowledge of the manifest divinity, that is Jnana and Vijnana, who is unmoved under any circumstances. Just now I told you how to be unmoved. जिसको जो बोलने का है बोलने दो, जो जो नहीं बोलता है, अच्छा बोलता है, वो भी. Sometimes I tell people, you know what? Somebody says you are good. Mind में सोचो साला बोल रहा है मेरे को you are bad. And somebody who says you are the worst thing on planet Earth, then in your mind you should say, he is saying I am the best that has happened. It's your point of view against his point of view, no? And both points of view are wrong because everything is under Maya. ना तुम्हारा सही है ना उसका सही है, दोनों भी सही नहीं है, दोनों भी गलत नहीं है. वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा है, तुम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो. तो तुमको जो दिखता है वो उसको नहीं दिखता है, तो उसको जो दिखता है वो तुमको नहीं दिखता है. तो why are you bothered about it? He may think you are the worst thing on planet Earth. Oh, let him think, no? You consider yourself good enough. Why bother about it?
Yes, but trying to reach the state of perfection is always there. That is why he says, self efforts are important. हमको हमारा काम करना चाहिए. समझ में आया? अपना काम करते रहने का. जैसे एक दिन समझो अगर तुमने छोले बनाए, इसका मतलब ये नहीं कि तुम परफेक्ट बन गए. No, you have to keep on making and making and making till a time will come in your life when your choles are going to be perfect. And then, you know, even do you know, in our life we always have this person. वो मेरे ग्रैंड मदर की जो है ना चीज खाने को कितना मजा आता था. मम्मी को तो बनाने को ही नहीं आता है. हम लोग ऐसा बोलते हैं. या फिर वो आंटी है ना, उसका घर में ये आइटम बहुत अच्छा बनता है. माय मम्मी डजंट नो टू डू. ओके, but my mummy makes this. Nobody's mummy can make that Maggi noodle. Okay, my mummy makes better Maggi noodle than somebody else's mummy. So here the thing is, nobody is perfect, but everybody wants to go towards perfection. So let us try to do that. So in our world we have to always have this equanimity. So don't get carried away by somebody says you are bad or somebody says you are good. No use, छोड़ो ना. You are neither good nor bad. क्या? So is unmoved under any circumstances. Don't get moved under any circumstances. It is chapter 6 verse 8. Yeah. Whose senses are completely under control. आँख, कान, नाक, ये सब कंट्रोल में रहना चाहिए. आई टोल्ड यू ना, द ऑब्जेक्ट्स आउटसाइड आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्टर्बेंस. It is the one inside who is responsible for the disturbance in your world. See, I told you yesterday, a glass of wine, if you are a teetotaler, गंदा स्मेल आता है, ऐसा करके बोलेगा. लेकिन जिसको वाइन पीने का आदत है, नाइस वाइन. वही आइटम को एक लाइक आया, दूसरा डिसलाइक आया. क्यों? द वाइन इज नॉट डूइंग एनीथिंग. इट्स द वन इनसाइड विच इज क्रिएटिंग दिस लाइक्स एंड डिसलाइक्स. ओके, अभी वेजिटेरियन के सामने मैं केकड़ा खाने को लग गया तो बहुत तकलीफ होगी वेजिटेरियन को. वो एक तो ऐसा टॉइंग 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 ऐसा, इतना बड़ा बड़ा पैर है उसका, और मैंने डर भी लगता है. अभी है ना, मैं आपको बताता हूँ, मैं उधर मलेशिया गया था. उधर केकड़ा देखा. वो केकड़ा अगर मैं उसके एक टंगड़ी इस तरफ करूँ, एक टंगड़ी इस तरफ करूँ ना, वो कुछ नहीं तो 5 फुट का डिस्टेंस था. वाओ. हाँ, और वो हाँ वो सामने ऐसा खड़ा था, ओ देखते हुए. ऐसा इतना बड़ा केकड़े लोग है. वो जापान से आता है. It's in Japan, and there is a place in Singapore which I love to go to. Okay, yeah, it's called Jumbo. उसके पास they have crabs, and for one person, when you say I want a small crab, वो 1.25 किलो का एक क्रैब आता है. 1.25 किलो का बोलेगा तो इतना बड़ा, मेरा खोपड़ी के जितना. 1.25 किलो. हाँ. देखो, 1.25 किलो में है ना, मेरा खोपड़ी में 100 ग्राम्स भी भेजा नहीं है, इसके लिए बोल रहा हूँ. तो एनीवे, तो 4 जन जाएंगे तो 3-3.5 किलो का एक क्रैब देता है. वो इतना बड़ा कि पूछो मत. मतलब ये टेबल में आधा टेबल कवर होता है, इतना बड़ा क्रैब रहता है. तो वही अगर वेजिटेरियन को बोलो चलो मेरे साथ वो रेस्टोरेंट में, तो उसको तो बहुत तकलीफ होगा. एक तो क्रीपी क्रॉली क्रीचर्स देखने में तो पहले ही तकलीफ होती है, और उसके बाद वेजिटेरियन को बोलेंगे तो उसको तो बहुत तकलीफ होगी, है ना. सो द लाइक्स आर देयर, द डिसलाइक्स आर देयर. यू कांट हैव बोथ. सो व्हाट इज somebody's food may not be yours. That doesn't mean that that person is bad and you are good. No, it cannot be that. They say dog meat is the favorite in Korea.
डजंट मीन दैट द पर्सन हु डजंट ईट अ डॉग इज बैड और गुड, ऐसा कुछ नहीं है। वो उन लोग का फेवरेट फूड है, उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, तो वो उनका रहन सहन है। सो दिस पर्सन, his senses are under control. Ah, see, there is one difference which I have to tell you. Now suppose you are passing through, अभी हम लोग इंडियन लोग हैं, हम लोग ये चाइनीज का मार्केट रहता है ना, उसके यहाँ से जाएंगे तो है ना खड़े नहीं रह सकते, इतना है ना बू आता है उधर से, डेंजरस। और ऐसा लटकते हैं ना, एक डुक्कर बिक्कर ये वो सब, उसका चमड़ी वमड़ी रखेला रहता है, रे 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 रे। वो देखने के बाद तो अपने को कुछ तो भी तकलीफ होएगा। नाउ थिंक अबाउट इट, नाउ यू आर वॉकिंग थ्रू इट, इट इज गोइंग टू स्मेल, इज इट नॉट? गुरुजी ने बोला है सेंसेस शुड बी नॉट डिस्टर्ब। tamed. हाँ, तो गंदा बू भी आ रहा है तो नो प्रॉब्लम, यू कांट से आई डोंट लाइक इट, आई हैव टू लाइक इट। आई हैव नॉट सेड you are supposed to like it. Don't put words in my mouth. I have not said you are supposed to like it. There Let is it no not like, disturb you. yeah, there is no like and not, there is no dislike, both the things. So you can't say that you are liking it. I बोला हैदराबादी बिरयानी बहुत अच्छा स्मेल आ रहा है, हाँ बोला वहाँ पे है ना चाइनीज है ना कुछ पोर्क या कुछ बना रहे हो, ऐसा नहीं कर सकते। You are not supposed to like biryani and then you hate that other smell. There is no like and dislikes. अगर वहां से जो स्मेल आ रहा है तो नाक बंद करके चलो ना, मैंने थोड़ी बोला है कि स्मेल करो, नहीं पसंद नहीं है मत जाओ वहां पे। यू अंडरस्टूड व्हाट आई एम सेइंग? इफ यू डोंट लाइक इट डोंट गो देयर, इफ यू लाइक इट गो देयर। The difference which he is trying to tell you over here is don't get carried away by it. समझा? मतलब आईस्क्रीम अच्छा लगा, हम लोग बोलते हैं ऊस चांगला लागला तर मुळापासून खायचा नाही, मीन्स वो गन्ना रहता है ना, गन्ना शुगर केन, इफ यू लाइक शुगर केन डोंट ट्राई टू ईट इट फ्रॉम द रूट्स, mud will come in your mouth. So only eat that which you can. So liking only that which you can. All right, you need not like the whole thing. So take what is good if you feel nice about it, but don't keep on after it, ये बहुत अच्छा था, ये अच्छा था, कोई जरूरी नहीं। और कोई चीज में अगर समझो नहीं पसंद आए एकदम ऐसा 1 घंटा उसके ऊपर डिस्कशन मत करो, कोई जरूरी नहीं, नहीं अच्छा लगा ना आगे जाओ नेक्स्ट। समझ में आया? सो दिस इज द मीनिंग। डिस्टॉर्शन, नो, आई विल नेवर गो टू कोरिया बिकॉज दे ईट डॉग्स। तेरे को मैं कल कोरिया उठा के पैक करके है ना DHL, कौन सा वो कंपनी है उसमें भेज दूंगा। Samsung. नहीं नहीं फेडेक्स, Yeah. वो जूलिया रॉबर्ट जाती है वैसे तुम लोग को भी पार्सल करके भेजना पड़ेगा। बोले साले कुत्ते खाते हो उसकी लाइन चले जाओ, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। सो डोंट गेट मूव्ड बाय दैट। Whose senses are completely under control and to whom earth, stone and gold are all alike. Remember there is this instance when Ramakrishna Paramahansa in one hand is this coin and in the other hand he takes mud and he throws both in the Ganga. So हर एक चीज में ये देखना बहुत जरूरी है। The gold, the stone or whatever is one and the same. गोल्ड का लाइकिंग किसी किसी को बहुत रहता है, कोई जरूरी नहीं है। गोल्ड एक पत्थर के बराबर है। हाँ, डेड बॉडी का गोल्ड उतार के लेते हैं लोग, लेते हैं कि नहीं लेते? कोई अगर मर जाता है ना, तभी मरने के टाइम पे जाके उधर खड़े रहने का, वो गोल्ड का बंटवारा होते रहेगा उसका। ओ माय मम्मी प्रॉमिस्ड मी द गोल्ड चेन, हाउ कैन यू टेक? अच्छा, नो उसके कंगन मेरे हैं। अरे यार वो मर गया है, उसके बारे में सोचो ना तुम, उसका कंगन कौन लेने वाला है, भंगड़ी कौन चेन कौन लेने वाला है, उसका अंगूठी कौन लेने वाला है, उसके ऊपर। सो वी आर सच ग्रेट पीपल, कोई नहीं,
वो गोल्ड है, एक डेड बॉडी के ऊपर था. इट्स एज गुड एज द डेड बॉडी. डोंट यू अंडरस्टैंड? So gold, yeah, Padma had asked me one question long ago. Gold is the purifying factor. Of course, gold is the purifying factor. Pavitram, it's called. Yeah, Pavitram. Yeah, you see, even the kidas in the dahi are the purifying factor. Doesn't make them Pavitram. You know, दही बनता है, दही उसमें वो विरजन डालने के बाद ही दही बनता है. तो हम लोग उसमें जो चीज डालते हैं उससे वो पवित्र बनता है. लेकिन ऐसा ही तुम मेरे को खा के बताएगा वो नहीं. बोलेगा एक वन आई विल गिव यू 1 kg ऑफ दिस यीस्ट सेल्स, ईट एंड शो मी. नहीं खाएगा. लेकिन वही ब्रेड में डालते हैं तो हम लोग ब्रेड खाते हैं. हर एक चीज दुनिया में पवित्र है. हर एक चीज दुनिया में पवित्र है. उसके देखने का अंदाज के ऊपर. अगर मैं गंगा का गंदा सा पानी सिर पे डाल सकता हूं, वो पवित्र है ना. लेकिन वही एक फॉरेनर को एक है ना ऐसा, वहां पे त्रिवेणी संगम के ऊपर डेड बॉडी है, सब उसमें स्नान कर रहे हैं, उसमें का एक गिलास पानी उठा के देना, बोलना इसको पी. कैन आई गेट अ बिस्लरी? फॉर हिम अ बिस्लरी हैज गॉट मोर वैल्यू देन दैट. मेरे पास एक घर में पानी है. हरिद्वार में एक जगह है, दैट प्लेस इज कॉल्ड हर की पौरी. वहां पे ना सब नंगे पंगे लोग नहाते हैं, गंदे. वहां पे सुसु भी करते होंगे फॉर ऑल यू नो इन दैट वाटर. उसमें का पानी है. इट इज पवित्र वाटर बाय द वे. So neither is the gold considered pavitra from that perspective, nor is this water. If the gold which is put on top of a dead body, okay, or the golden statue made of the devil, what value will it have for you? You see, in olden times when this Moses was there, they had created the gods, golden gods, and they were praying to these gods. And Moses comes with these tablets from top of the mountain, and then they destroy these gods made of gold. The entire facade of Taj Mahal was made of gold and diamonds. It's disappeared. The gold which you are putting on somebody, suppose it is now given to the golden temple and it becomes the facade of the golden temple. So it is not about the person, okay, it is about how you see it inside of you. So that is why I said it is not the objects which are disturbing, it is inside of you that is the disturbance. Yeah, you can log off, no problem. No, I'll listen to it inside. Okay, fine. Yeah, just you can shut off the video and audio also. So the gold, the stone and the earth are all alike to this person. Krishna used to wear gold ornaments, no doubt about it. The ornaments made, worn by Krishna would have much more value than an ornament worn by Silk Smita. I'm sure, isn't it? Yeah. What adorns Krishna is the ultimate, yes. Yes. So you think about it. So it is not about that person at all. But tomorrow if Krishna comes in the avatar of Silk Smita, तो कुछ अजीब हो जाएगा, है ना? So we can't have the bhedbhav also. So who is the one who is creating the disturbance? It is your mind alone which is creating. So we have to overcome this mind. Is spoken of as a God realized soul. He who looks upon well-wishers and neutrals, as well as mediators, friends and foes, relatives and inimicals, the virtuous and the sinful, with equanimity stands supreme
I think this is where we started today, isn't it? We actually started with this verse in the morning. There is neither a friend nor an enemy amongst us. And let this verse be the foundation of every relationship in our world. We should never look upon well-wishers as well-wishers. It's okay. They are equal. They're as foes. Somebody comes and says you are not good doesn't mean that we are not good. Self-esteem. You have to have your own self-esteem. When you consider yourself as the best tool of the Lord, if somebody comes and tells you you are an idiot, doesn't make you an idiot at all. On the contrary, you should consider yourself as the best tool. So there are well-wishers and there are neutrals. There are those who will stand, fence sitters we call them. Do you like this? Do you know you don't like this? Nah. Do you like this? Nah. You don't like this? Nah. So what is it? Is it yes or no? Okay. Oh, these are called fence sitters. And then there are those people, those who don't want to be, they want to be neutral. Why? क्योंकि अगर लाइक बोलेगा तो उसको तकलीफ होगी, डिसलाइक बोलेगा तो उसको तकलीफ होगी, तो दोनों को है ना, यू वांट टू बी पॉलिटिशियन, Diplomatic. या पॉलिटिशियन सिट इन द मिडल, और हमारे इंडिया में जो बीच में बैठते हैं उसको और कुछ नाम से बोलते हैं, बीच वाला. So there are the beach wallas also. So we don't bother about these neutrals. Neither are we bothered about the well-wishers. Nor there are mediators. Mediators बहुत होते हैं हमारे इसमें. अरे डोंट वरी यार, वो ऐसा ही है. वो तुमको आके एक बोलेगा, उसको जाके दूसरा बोलेगा. हाँ, इसी मैं तुम दोनों में है ना झगड़ा नहीं करना देखना चाहता हूँ. बोथ आर फ्रेंड्स, बोथ आर गुड फ्रेंड्स. और जब भी उसको अलग जाके बोलेगा साले उसके जैसा थर्ड क्लास आदमी नहीं है, तू उसके साथ मत जाना, और फिर इसको आके बोलेगा तेरे को मालूम है लास्ट वीक में उसने ऐसा किया था, और जब दोनों सामने आते हैं ना तभी बोलते हैं यू शुड हैव शेक योर हैंड्स, डोंट, एवरीथिंग इज फाइन सर. एंड सो दिस गाय थिंक्स ही इज माय फ्रेंड, दैट गाय थिंक्स ही इज माय फ्रेंड. Nobody is your friend and nobody is your enemy also. समझ में आया? So you don't have friends and you don't have enemies. So there is only one person, ऊपर वाला, God. When I got married many years ago, the thing which people say, trust, love and trust and friendship and all those things, marriage वाले में बहुत बोलते हैं. डू यू ट्रस्ट मी? तो मैंने कल्पना को बोला आई डोंट ट्रस्ट यू. तो नेचुरली ना बोलता मैरिज में ट्रस्ट रहना बहुत इंपॉर्टेंट है. मैं बोला नाइदर डू आई ट्रस्ट यू नॉर माई ओन सेल्फ. मैं तेरे को आज हाँ बोलूंगा, कल ना बोलूंगा. कैन यू ट्रस्ट योर ओन सेल्फ? आज कांग्रेस आया वाला, कल बीजेपी वाला, और परसों जनता पार्टी वाला. क्या मालूम, अपन है ना इधर उधर उधर अपने वैसे भी थोबड़े घूमते रहते हैं. We can't be true to anything in our life. किसी जमाने में हम लोग ओवल्टीन पीते थे, आज ओवल्टीन सामने रखेगा, नो 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 नो, मैं बूस्ट इज द सीक्रेट ऑफ माय एनर्जी, कपिल देव. और फिर थोड़े दिन के बाद आएगा कैडबरी, फिर वो क्या वो बॉर्नविटा, और थोड़ा दिन के बाद आएगा माइलो. बच्चे को पूछ के देखना, सेंथिल, वो चेंज करते रहता है. तो हम लोगों का ऐसा है. So let us not get into this that you can trust your own self also. Today you will say one thing, tomorrow you will say another. Guruji will say also like that. Don't trust him. Today he will say कि you are from my inner circle. Tomorrow he will say, who are you? So the thing is only God. So I told Kalpana one thing. I said, you know what? In my life, I don't trust you, neither do I trust myself. And the only one person that I trust is called God. Because I know, कुछ भी हो जाए, वो है. ना तू रहेगी, ना मैं रहेगा, लेकिन वो तो रहेगा ना. जो चीज अटल है, उसके ऊपर ट्रस्ट रखना बहुत इंपॉर्टेंट है. So trust God alone. You don't have to trust anybody else in your world.
जो तुमको लगता है कि सबसे प्यारा है कैन बिकम योर बिगेस्ट एनिमी टुमारो. Why are we bothered about it? So don't get carried away by all these things. So he who looks upon well-wishers as neutrals as well as mediators, friends and foes, relatives and inimicals, relatives. This is my mother, this is my father, this is my बच्चा, this is my खच्चा. सब गलत है. कोई किसी का नहीं है. कोई किसी का नहीं है. तुम अगर ये सोचते हो कि ये मेरा बच्चा है आज, I'm sorry, you don't know. Your बच्चा when he gets married ना will become pariah very soon. पराया बोलेगा तो मालूम है ना, कुत्ता. Yeah. या हमारे इंडिया में पराया बोलेगा तो बाहर वाला, यहाँ पे कुत्ता. पहले से ही सोच के रखने का, सब पराया है, अपना कुछ नहीं है. So the moment you think paraya, you will feel, yeah, apanda. It's something which you got to, believe in. You've been telling this for so long, भाऊ. अभी तो आपने उसका मस्त वर्ड भी निकाल लिया. So nothing is yours, everything is there. और तुम किसको ट्रस्ट करने की बात करते हो? कोई भी In ट्रस्ट Tamil, Paraya means loafer. या लोफर ही है. हमारे कुत्ते का नाम था लोफर. हाँ. So ऐसा है. So we don't bother about. And why are you thinking that that person is yours? I mean, who gave you the right of having ownership of somebody else? You don't even have ownership of this body. Please understand this. This body is also not yours. If the body was yours, then नाक में से कान में से सब नहीं आता था, तो कंट्रोल कर सकते थे उधर. वो तुम्हारे हाथ में किधर है? नहीं है ना. तुम्हारे हार्ट बीट तुम्हारे हाथ में है ना. तुम्हारा हाथ का चलना, पैर का चलना तुम्हारे हाथ में. कोई भी चीज तुम्हारे हाथ में नहीं है. बॉडी ऑल्सो इज ऑलवेज ऑन रेंट. बॉडी इज ऑन रेंट. वैसा ही है. So body is on rent, just like you. So don't bother about it. So when we talk of relatives as our own, I'm sorry, please, there are no relatives of your own. Nobody is yours. Inimicals बोलेगा जिससे हमको है ना घृणा है, जिसको हम हेट करते हैं, जिसको हम मैंने बोले तू मेरे सामने आएगा तो मैं तुम्हारा कचूमर कर दूंगा. अरे यार, ऐसा कोई जरूरी नहीं है. वैसे भी वो सामने आने वाला है. मक्खी देखा क्या पिक्चर? देखो, सैटरडे को है. मक्खी बहुत मस्त पिक्चर है. बहुत उसका एक वो हीरो मक्खी है. द पिक्चर मक्खी समझता है, वो मक्खी Like. बनता है. हाँ, अपना कर्नाटका में बनाया है वो स्पेशल फिल्म. 3D क्या इफेक्ट है उसमें, स्पेशल इफेक्ट है. I know, I was surprised to see that. I didn't see the whole film. I just saw from 5 minutes of it. It's an amazing film. Makhi. So, inimicals. You can't do anything about inimicals. वो हमारे से घृणा ही करते रहेंगे, जैसे सास बहू. तभी डोंट एक्सपेक्ट हर टू बिकम टुमारो वेरी नाइस. वो तो वो दूध पिलाएगी, उसमें भी जहर डाल के देगी. तो यू बी केयरफुल विद दैट. कंसिडर एवरीथिंग एज ऐसा दूरबीन से देखने का सबको, नहीं तो माइक्रोस्कोप से. तो कौन? So I'm not saying you have to be suspicious of everything. What I am trying to say is here very simply this: you have only one to trust. That is the Lord Only Himself. the Lord. All these great people were betrayed. Jesus Christ was betrayed. Buddha was also betrayed. See? So why are you thinking that nothing is going to happen to you? तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं, एक साइड में बेटा और दूसरे साइड में बेट्रेड. बेटा बेट्रेड. तो डोंट बॉदर अबाउट इट. दोनों ऐसे ही है. एक क्या माड़ीचे मणि बोलते हैं हम लोग. समझ में आया? एक माल का मणि है. मणि बोलेगा तो बीड्स है. Bead. सब एक जैसे है.
किसी कोई अच्छा और कोई बुरा नहीं है, सब एक जैसे। तो कोई वेल विशर नहीं है, कोई इनिमिकल नहीं है, कोई किसी के Probably साथ। this advice is given so that you don't get develop more towards anything. Yeah, you have to be detached from everything, no? See, in these words, it's this chapter is for purpose of Detached. removing a lot of our kachara from our mind, because we have beliefs in our world. What are those beliefs? ये मेरे हैं, उसके पहले वो काफी कुछ बोला है. All these things, we have made judgments on certain things. And Get you out learn of your this lesson judgment. when you get duped. That's all. Correct. So the virtuous and the sinful with equanimity stand supreme. Okay. So the last line मैंने है ना गलत से पढ़ा. The virtuous and the sinful. Can you imagine, the sentence itself creates such big problem in our world? Actually, the virtuous and the sinful. Full stop होना चाहिए. So then there are the virtuous and then there are the sinful people. Who are the virtuous? वो हमेशा है ना एकदम the goody goody types in this world. हमारे बहुत अच्छे अच्छे दोस्त ऐसे हैं, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स अच्छे अच्छे हैं, जो बोलेंगे ना, they will come and they sweet talk you, very very sweet talk you, and they will make you so literally molten butter के जैसा तुमको बना के छोड़ देते हैं, और उसके बाद ब्रेड पे लगा के खा जाते हैं तुमको. उनके उनके बातों में मत आना, क्योंकि कोई भी इस दुनिया में वर्चुअस नहीं है. कोई अगर किसी ने बोला ना आई एम द ग्रेटेस्ट पर्सन ऑन अर्थ, मैंने आज तक कोई भी सिन नहीं किया है, ऐसा ऐसा आंख ऐसा ऊपर करके देखने का उसका, अच्छा तू तो भगवान से पवित्र है. मेरे बाजू में एक लड़की रहती थी, उसका नाम था पवित्रा. मेरे को है ना बहुत टाइम पे वही मैं बोलता था, ये यहाँ पे लोग पवित्र पवित्र का नाम क्यों रखते, मेरे को कभी पता नहीं चलता था. So then I understood. I aspire to be was the meaning. I aspire to be pavitra. Good, good. So there is nobody who is pure, nobody who is refined. Understand this. बॉडी में हो ना, वो पहले से इम्प्योर है. जब पैदा ही हुए थे तब इम्प्योरिटी में से बाहर आ गए थे. एमनियोटिक फ्लूइड बोलते हैं उसको. करेक्ट है ना? Krishna has described amniotic fluid in one of the verses. He says, like the body is covered by the amnion, the mirror is covered by soot, and the sun is covered by clouds. He says all these words. What does it mean? You are already covered. Maya covers you the moment you are born. So don't bother about you calling yourself pavitra and all that thing. Nobody is pavitra. और जनेऊ डालने के बाद पवित्र नहीं बनते, और कान पे ऊपर रखने के बाद है ना टॉयलेट को जाते, उसके बाद ज्यादा पवित्र नहीं बनते. मेरे को ये कभी नहीं समझा है कि कान के ऊपर ऐसा टॉइंग करके गुंड डालने के बाद टॉयलेट के एकदम क्लीन आएगा क्या. कुछ नहीं होता है. क्या होता है? No, that is just so that doesn't get soiled. That's all. The thread Already, doesn't get soiled. yeah, already you are soiled. पहला दिन रात को दारू पी के आया है, तभी वो जनेऊ नीचे था कि ऊपर था? नहीं, दारू पीने का नहीं, जनेऊ डालने के बाद. किसने बोला? वो तीर्थ है, तीर्थ पीना पड़ता है, और फिर उसके बाद चकना खाने का रहता है, मतलब प्रसाद. वो भी है ना मस्त ऐसे तंगड़ी कबाब. हैव यू एवर, आई मीन, या भी खाली पिक्चर में आप लोगों ने देखा रहेगा, लेकिन कोई कोई अगर बार में गए, हाँ अपर्णा ने तो मालूम है, उधर 5 स्टार होटल में तो बार्स रहता है, उधर तो एकदम मस्त से ढींचा एक दारू के साथ मस्त ऐसा तंगड़ी बिंगड़ी खाने को मिलता है, बस तीर्थ भी पीने का और प्रसाद भी खाने का. एंड when the people said जैन मील मिलता है क्या, you have please always look at Jain meal in a very very
परफेक्ट वे, वहां पे भी तीर्थ और प्रसाद है। वो लोग कितना भी कान को लपेट लेंगे ना तो भी वो प्योरिटी नहीं आने वाली है। सो आई एम सॉरी, देर इज नो बडी हु कैन कॉल हिमसेल्फ प्योर बाय एनी स्टैंडर्ड्स। देर इज नो प्योरिटी हियर, so why not live with this impurity? So the thing which Krishna is trying to tell over here, don't get carried away by this purity and impurity. छोड़ो, क्या करने का है अपने को? So you should have equanimity over there. हाँ, वो प्रीस्ट व्हाइट कलर का क्लोक डाल के आता है, एकदम झकास व्हाइट रहता है, स्त्री कड़क। क्या हाइड करता है उसके पीछे तुमको क्या मालूम? बट we have not gone to go see the priest, we have gone to see the God. So equanimity of mind will come if you get rid of all these peripherals. सिंगल पॉइंटेड डिवोशन में दूसरे लोग क्यों आते हैं? अगर कृष्णा के पास सिंगल पॉइंटेड डिवोशन है तो उस तुम्हारे लाइफ में दूसरे लोग कहां से आ गए? तुमको दूसरा चीज क्यों दिखने लग गया? सिंगल पॉइंटेड डिवोशन का मतलब एकाग्रता, एक ही सिंगल पॉइंटेड, नो? तो वो डिवोशन के सिंगल पॉइंटेड में बाकी सब कहां से आ गए? तो वो नहीं आना चाहिए। तो दैट इज देयर स्टैंड सुप्रीम। Living in seclusion all by himself, the yogi who has controlled his mind and body and is free from desires and void of possession should constantly engage his mind in meditation. This is a very difficult verse. Living in seclusion all by himself. In today's day and age, you can't be secluded anywhere for that matter. कोई तुमको अकेला छोड़ता है क्या? फेसबुक है, ट्विटर है, ये है, वो है, अकेला रहने का बात ही छोड़ो। Even if you go and stay in the Himalayas, वहां पे भी है ना, the security company will ask, तुम्हारे पास पासपोर्ट कौन सा है? इंडिया का है कि चाइना का है? क्यों आए हो यहाँ पे? You have to answer 1001 questions over there. You can't enter territories today. You can't go to the Himalayas without government permission. You know that? तुम बोलोगे कल मैं कैलाश चला जाता हूँ। आई एम सॉरी, कैलाश जाने के लिए ना चाइनीज गवर्नमेंट का परमिशन लेना पड़ता है और वो परमिशन मिलती नहीं है। सो यू आर रिस्पॉन्सिबल नाउ। सो वेयर इज द क्वेश्चन ऑफ सिटिंग अलोन? यू कांट इवन सिट अलोन इवन इन योर ओन हाउस। Constantly somebody is going to come and knock at you, and if you don't open the door for 5 days, they will call the police and they will say यहाँ से बदबू आ रही है, शायद अंदर कोई मर के गिरा है। तो Then they'll break open your door. So हाँ, or at least the chairman of that society will come. You have not paid the bill for the last 2 months. Can you kindly pay? नहीं तो गुरखा आएगा, मैडम नीचे बुलाया है आपको, मीटिंग चल रही है। मतलब क्यों? वो क्या है, वो सबको पूछ रहे हैं, बिल नहीं भरा। तो सेक्लूजन में रहने का कोशिश भी मत करना, क्योंकि वहां पे वो गुरखा तो भी आने वाला है, चेयरमैन तो भी आने वाला है, नहीं तो कोई तो भी आने वाला है। हाँ, नहीं तो अपने बच्चे ही बोलेंगे, व्हाट हैपेंड टू यू मॉम? ऐसे क्यों देख रही है? तेरे को लकवा मार गया है क्या? You understand lakwa is what? Paralyzed. paralysis. So like you are sitting in meditation, ओम, ऐसा आंख ऐसा खुला रख के, उसको लगेगा तुमको पैरालिसिस हो गया है, वो तुमको अकेले छोड़ने वाले नहीं है। तो ये जो वर्स है ना, यू हैव टू अंडरस्टैंड इट फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव। लेट अस ट्राई टू गेट द पर्सपेक्टिव राइट। Living in seclusion all by himself. You may be in the greatest city in the world. You may be in New York, you may be in Mumbai, you may be in Tokyo, or whichever city in the world. Does not matter. You can be secluded and alone also. The seclusion and the aloneness comes out of cutting the senses. The noise is there outside. Why is it disturbing you?
Let the noise be. Unperturbed. Yes, people are keeping coming and going. Why is it disturbing you? आंख से दिखता है ना, देखो अंदर क्यों जाता है। आंख के ऊपर जो घंटी रहती है ना, उसको ही बंद कर देने का, उसका ही स्विच टुक ऑफ करके रख देने का। कान में भी एक है घंटी, उसको भी बंद करके रखो। बोला कोई भी कुछ भी बोले, मैं तो सुनने वाला नहीं हूं। अच्छा बोले या बुरा बोले, क्या करने का है। Then you have secluded your body and yourself. The gap in between has come, no? Nothing happening in the mind. Between this and this, between the self and the bodies, is this. That is a vacuum. You can exist in this vacuum. Even if you are staying in the most amazing place in the world where there is too much of noise. So, living in seclusion all by himself, the yogi has controlled his mind and body. This is what the verse is. Mind and body has to be controlled. किधर भी रहो तुम, हिमालय में रहने का जरूरी नहीं. You can stay even in, for all you care, you can be staying in Arctic Circle in one place, seclusion. वहां पे तो सब है ना, वो आएंगे पॉइंट 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 करने के लिए. वो क्या बोलते हैं उसको, Penguins. पेंगुइन वगैरह सब आते हैं. सी ऑटर्स, ये वो सब आएंगे वहां पे मिलने के लिए. Don't worry about it. Does not matter. Why are you bothered? You can be staying right here in the city. You can be staying in a village, or you could be staying in Timbuktu, or you may be staying in Arctic Circle. Don't bother about it. You are going to be alone. Cutting off the mind and the body. Body, let body do whatever it wants to. तुमको क्या करने का है, मतलब जो अंदर है उसको बाहर वाले से कोई मतलब नहीं. दिस डज नॉट मीन यू हैव डिसफंक्शनल बॉडी. मेरा हाथ ऊपर आ रहा है, क्यों आ रहा है मालूम नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते. अने तो किसी के गले में ऐसा हाथ डालेंगे, वो एक रख के देगी ठप करके, बोले हाथ संभाल तेरा तू. नो नो, you may be performing all the ablutions in the world. You are going to be eating, drinking, doing everything. The body, remember, has its own mind, whereas you are disconnected from that mind. The nose need not be told that you are supposed to breathe. It has its own mind. Remember, mind is everywhere. We have discussed this. Yeah. So the nose has its own mind also. It's going to breathe. हाँ, गंदा कोई स्मेल आएगा तो नाक के ऊपर अपना उंगली जाने ही वाला है. आई एम सॉरी, यू नो दिस वेरी वेल. Let that happen. Why are you bothered about it? देखो कुछ खट्टा लगा तो खट्टा लगा, उसमें नमक डालो या फिर शुगर डालो और उसको बराबर कर दो, इक्वल. See, don't get tortured is what I am trying to say. You know tortured? कोई तो भी गुरुजी ने बोला है, even if there is noise outside, you should be cool and calm. तो बच्चा आके ये रख के देने का, कूल एंड काम. बोलेगा आगे जा. No, you have to do what it requires to be done. Understood? So don't get carried away by these sentences. It only means that the disconnect is there outside with the inside. Then you are this great person. All right? So seclusion, living in seclusion by himself. The self is always alone. Please understand this. And to disconnect between the two is what you need to do. It's free from desires and void of possessions. It's free from desires. There are no desires in this world. I want this, I want that, ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए. ऐसा कोई भी desire नहीं है. Here let me correct one misconception that happens. Desires are not to be mixed with what is called as your inherent duties. They are not your desires. Those are duties given to you by God. You got to do them.
डिजायर मीन्स जो तुमको खड्डे में डालने वाली चीज है, वो डिजायर बोलते हैं उसको। wants. हाँ, मेरे को ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए। क्यों चाहिए? I mean, you are going in a perfume shop and then you are saying क्रिस्टियन डियोर है, नीना रिकी है, ये है, वो है। अरे 50, मतलब तुम्हारे डिजायर पे डिजायर चल रहे हैं। नो, एक तो तुम गए क्यों वो दुकान में? बोले मैं गया था डिओड्रेंट लेने के लिए। अरे डिओड्रेंट बाजू का दुकान में मिलता है, वो परफ्यूमरी में जाके क्या करने का है तेरे को? समझ में आया? So you need not extend yourself to that level. So you can just have those little things in your world which do not constitute a desire, they are your necessity. जैसे पानी is important, it's a necessity. Okay? Essentials. Yes, don't consider it as something, it's my desire to drink water. गुरुजी ने बोला डिजायर नहीं रखने का, कल तुम्हारा टुप हो जाएगा। बोला पानी पीने का भी डिजायर नहीं लाने का, ऐसा बोला है। डिस्क्लेमर। So, no, to live in this world like a normal human being is not called desire. It is your basic requirement that you got to fulfill. जैसे खाना टाइम पे खाना चाहिए, सही खाना चाहिए, ब्रीथ करना चाहिए, सुनना चाहिए। ऐसा नहीं है कि many a times I have heard people say, I have become a spiritualist, I don't like to watch films. Then you please send them to this Guruji. He loves to watch films every day. उसका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा वहां पे। परसों ब्रिटो गया था उधर लेस वेगस, तो बोला ब्रिटो मेरे को भी जाने का है। बोला क्या करने के लिए? बोला मेरे को भी उधर जाके यो यो गो गो पो पो कौन सा शोज है वो देखने का है। गुरुजी भी एकदम चालू कैरेक्टर है। It's not important. I mean, why never become a hypocrite in life? Hypocrisy means सामने दिखता है, तुमको क्या करने का? दिखता है, दिखने देना। समझ में आया? हिपोक्रेसी मतलब मैंने नहीं देखा, देखने के बाद नहीं बोलने का। समझे? तो you should never be a hypocrite. All that comes to you naturally, take it. Don't bother about it. It is not called desire. It is your, God has given you those things. Understood? There's a fine line between these two. It's very difficult to understand. Your inner being will explain to you when the time comes. So don't bother about it. Whether it's your desire or no, don't bother about it. If God wants to give you, He is anyway going to give you. If it is a car, He will give you the car. Why are you bothered that it's a desire I should not have? I'm sorry. It's a desire का सवाल ही नहीं आता है. Many a times when people ask me, car, I always tell them, मेरे पास एक पजेरो रहने का, क्योंकि अपन लोग तो डॉन है. पजेरो एंड डॉन्स हमारे पुराने जमाने में रहते थे. तो ये डॉन को पजेरो क्यों मांगता है? If you ask me, I would love to go traveling in that vehicle everywhere. It is a sturdy vehicle which I can take to the Himalayas as well. So I would love to. You think I want to own it because it's a status symbol? To the hell with status symbol. वो तो bicycle भी नहीं है status symbol. कोई काम का नहीं है. Yes, utility based. हाँ, it is basically so that it's something which you wish to do in your world. Like, I would love to go to Kailash. Yes. Why? I want to meet Shiva. I would love to meet him. I mean, you will say कि उधर जाने का क्या जरूरी है, इधर ही बाजू में मिलेगा ना, ऐसा ऐसा करो आ जाएगा। नहीं, मैं गोमुख में जाके जो गंगा देखूंगा ना, वो गोमुख और कहीं नहीं है। करेक्ट है कि गलत है? गोमुख इज गोमुख, है ना? तो गोमुख में जाना जरूरी है। हाँ, वाराणसी जाना जरूरी है, क्योंकि वहां पे शिव जी रहते हैं। वो क्या करते हैं, सबके कान में बोलते हैं। मेरे भी कान में कुछ बोल देंगे वहां पे, तो कितना अच्छा होगा। बोला तेरे को बुलाया है, जल्दी कर। So it's like that. So don't
Don't be a hypocrite. Be your normal self. What is needed is needed. What is required for your day to day life, please take it. Don't bother about it. Thinking कि it is all about I should not have possessions. Possession का मतलब that which you possess. I am nobody's possession. The starting I said these words. You can't say this belongs to me. I am nobody's. And nobody is mine. Yet everything is mine. You understand this? हर एक चीज मेरी है, लेकिन मैं क्लेम नहीं करता हूँ. मैं ऐसे नहीं बोलता ये मेरी उंगली, ये मेरी उंगली, ये मेरी सभी तो मेरी उंगलियां हैं. समझ में आया? सो पोजेशंस नहीं है. उसको पोजेस करने के बाद भी पोजेस नहीं करना. Knowing that everything is you alone, you don't possess anything. You are the king and the master of this universe. Don't bother about it. Should constantly engage his mind in meditation. I have explained this word called meditation before. Meditation means सिर्फ एक चीज के बारे में तुमने ध्यान रखना है, भगवान के बारे में, अल्लाह के बारे में, कृष्णा के बारे में. Just focus on him. Don't focus on anything else. If you focus on anything else, you are going to get disturbed. So meditate on me alone. Okay, so we'll end over here. All right. So, any questions? No? भाव आपने कहा था अभी कि मेडिटेट ऑन मी अलोन. सो बट देन आई वाज रीडिंग समथिंग द अदर डे ऑन चैतन्य महाप्रभु. हाँ. और उनके इसमें लिखा है जो उनके फॉलोअर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं इन द सोसाइटी, जो इस्कॉन है वगैरह, तो पहले स्टूडेंट्स को जो गौरंग का फॉर्म है उसके ऊपर फोकस करने को लगाते हैं बिफोर दे आर टेकन टू राधे कृष्ण. व्हाई इज दैट? Oh, yesterday this story was being told to somebody, so I will just give you an idea. Gauranga means what? Gau means what? Gora. फेयर, Hmm. golden, Rang means color. Gori Rang. Yeah. Gaurang, the color of Radha. Radha was fair, Krishna was dark. Okay. राधा was fair, कृष्णा was dark का मतलब ये है कि हम लोग जो हैं, हम लोग फेयर है, हम लोग दिखाई देते हैं. कौन दिखाई देता है? शरीर दिखाई देता है. काला जो है कृष्णा, वो दिखाई ही नहीं देता. वो दिखता भी नहीं है, कभी भी नहीं दिखेगा. चले गया छी, वैनिश्ड. So he is not visible. The Gaurang is Chaitanya Mahaprabhu who taken birth as Krishna in the body of Radha. Why he had taken birth? to experience Radha's love. Correct. फिर भी आखिर में पूरा पिक्चर खत्म होने के बाद भी पूछता है राम की सीता कौन. गौरंग को यह भी नहीं पता चला कि वो क्या होता है. बोला डबल रोल करके करके मैं थक गया, अभी भी मेरे को मालूम नहीं मेरा बाप कौन था. ऐसा लिख के आता है ना, वैसा है. तो गौरंग को कितना भी बोलो ना तो भी कुछ समझ में नहीं आता. So first the attachment is always considered towards this form of Radha. If you go to North India, they say Radhe Radhe. Why? She was a devotee of Krishna. How to love Krishna is what you got to understand first. It's only when you can understand how somebody can love Krishna will you then follow that person. देखो प्लेन में हम लोग जा रहे हैं फर्स्ट टाइम, अपने को क्या मालूम, कम बोले इसकी पेटी बांध दो, बोले इधर पेटी किधर दिखाई नहीं देती बस. वो हमारी एयर इंडिया की हॉस्टेस बोल रही है कमर की पेटी बांध दो. बोला कमर की पेटी, पेटी तो मैंने उधर दे दी बाहर. So
वी विल फॉलो द गाय नेक्स्ट टू अस एंड सी, हाँ उसने ऐसा किया, बोला बटन दबाने से लड़की आती है, तो बटन दबाते रहने का, टिंग टिंग, देख मैजिक आती रहती है। वो हम लोग देख के सीखते हैं ना। वी ऑलवेज एजुकेट आवर सेल्फ बाय एग्जाम्पल, दिस इज वॉट वी हैव लर्न इन आवर स्कूल ऑल्सो, एंड वी ऑलवेज से ना उसके जैसा बन, बहुत कल्याण होगा तेरा। तो इसीलिए हम लोग को पहले ही बताया गया है, तो फर्स्ट इज वी हैव टू हैव डिवोशन फॉर द डिवोटी। देखो अभी अम, ब्रिटो को देखो, ब्रिटो ब्रिटो came to Padma, isn't it? And then Padma said, "You go to me." तो वो वहाँ यहाँ पे आया। तो consider it like that, where you first emulate somebody else and then you go towards the main. So first, in case of devotion, where devotional aspect is taught by the Gaudiya Samaj, they will first tell you to go towards Gauranga to understand how the devotee is. And then once you understand the devotee, then you can go towards devotion of Radha and Krishna. See them as separate and then see them as one alone. So it is a stage wise for the purpose of understanding. So you learn by example first and then you do yourself on your own. Got it? और कुछ? Padma, you have anything? No. Okay. Senthil, अभी डायरेक्टर को कट बोलने का जरूरी है। ओके